I, Jv'n, Neha Sharma, JVWU University, Department of Science and Technology, Faculty of Education and Mathematics. So, our today's topic is what is .NET and features of .NET, right? So, what is .NET? .NET is the software framework which is designed and developed by Microsoft. The first version of .NET framework was 1.4, which came in the year 2002. In easy words, it is a virtual machine for compiling and executing programs written in different languages like C Sharp, VB.NET, etc. Right? And it is used to develop फॉर्म-बेस्ड एप्लीकेशंस लाइक वेब बेस्ड एप्लीकेशंस आप जितनी भी वेबसाइट देखते हैं डब्ल्यू पे और गूगल पे वो सारी वेबसाइट्स जो हैं मेजरली वो डॉट नेट से ही कंस्ट्रक्ट की जाती है डॉट नेट के आईडीज़ के साथ में and .NET support more than 60 programming languages, in which 11 programming languages are designed and developed by Microsoft. The remaining non-Microsoft languages, which are supported by .NET framework but not designed and developed by Microsoft. So 60 programming languages को .NET support करता है तो आप देख सकते हैं कि .NET जो सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क है वो कितना ज़्यादा सपोर्टिंग है और यूजफुल है जो डिफरेंट 60 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ में सपोर्ट दे रहा है अपना ठीक है तो it provide functionalities and also support the industry standards like VB.NET, C Sharp, J Sharp, .NET platforms, right? So this is what all about the .NET. Now let's discuss the features of .NET. So what are the features of .NET? So we know some basics of .NET, right? Like what is .NET, so what are the features of .NET? Rich functionality out of box. .NET framework provides a rich functionality with set of functionality out of box. It contains hundred of classes that provide variety of functionalities. It is ready to use in your application. This means that as a developer, you need not go in low level details of many operations such like file IO, network communication, and so on. You just have to use the functionality over the .NET framework. Okay, so you don't need to write the code for that also. So rich functionality out of box. First feature of .NET. Second is easy development of web applications. Like you know that ASP.NET is also the part of .NET, right? Because so ASP.NET is a technology available on .NET platform for developing dynamic and data-driven web applications. ASP.NET provides event-driven programming model with complex user interface. So it's similar to VB6 that simplify development of web pages and ASP.NET Server Control provide advanced user interfaces elements like calendars, grid that save a lot of coding from programmer's side. Next is OOP support. This is very important. The advantage of OOP support we all know. .NET provide a fully object-oriented environment, and the philosophy of .NET is object is mother of all. Language like Visual Basic .NET now support many of core features that were lacking traditionally. Even primitive types like integer and characters can be treated as objects, something not available even in old languages like C, C++. तो OOPS का सपोर्ट भी प्रोवाइड करा रहा है .NET यहाँ पे उसके बाद है मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट because not .NET provides support over 60 programming languages, so it is a huge support. And generally, enterprises have varying skill sets. For example, company might have people with skills in Visual Basic, C++, Java. It is experienced that whenever a new language or environment is invented, existing skills are outdated, right? जैसे कि हम स्टार्टिंग में सी पढ़ते थे फिर C++ पढ़ी फिर जावा पढ़ी अभी पाइथन मशीन लर्निंग और इन सब में मेजरली यूज हो रही है तो हम पाइथन को एक्सटेंसिवली पढ़ रहे हैं और इसके अलावा हम देखें तो डॉट नेट वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए डॉट नेट आया पहले डॉट नेट आई था अब विजुअल स्टूडियो पे काम किया जाता है राइट तो विजुअल स्टूडियो के भी वर्जन आए डिफरेंट डिफरेंट है ना और अभी विजुअल स्टूडियो पे इसके थ्रू ही हम जितनी भी वेबसाइट्स वगैरह हैं हम डायरेक्टली कंस्ट्रक्ट करते हैं राइट so this means that if you have skill in C++, so you don't need to throw them, but just mold them to suit .NET environment.
तो डॉट नेट एनवायरनमेंट के मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट से क्या है कि आपकी स्किल्स आउटडेटेड नहीं होगी, आप अपनी कंफर्टेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड कर सकते हैं, बस आपको क्या करना है उसे थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू डॉट नेट ट्रांसफॉर्म करना है, और कुछ भी नहीं। Currently, four languages are available right off the box, namely Visual Basic .NET, C Sharp, JScript .NET, and Managed C++, Visual C++. And there are many more vendors that are working on developing compiler for other languages. 20 plus language compiler are available. So beauty of multi-language support lies in the fact that even though the syntax of each language is different, the basic capabilities of each language remain विद वन अनदर। ठीक है, तो इससे क्या है कि कंपाइलर्स भी हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए अलग काम करते हैं, तो सपोर्ट के लिए यहाँ पे मोर देन 20 कंपाइलर्स हैं, 20 प्लस लैंग्वेज कंपाइलर्स अवेलेबल हैं, राइट। बहुत सारे वेंडर्स हैं, राइट। तो मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट जो है उसकी यही फंक्शनैलिटी होती है कि सिंटेक्स सबका डिफरेंट है पर वो सपोर्ट कर रहा है सबको डॉट नेट फ्रेमवर्क के साथ में। Then next is multi-device support. Multi-device support, modern lifestyle, increasing embracing in mobile and wireless devices such as PDA, mobiles, Android PCs, now MacBooks, right? So .NET provide promising platform for programming such devices. .NET Compact Framework. अब देखते हैं कि एक वेबसाइट है जैसे अमेजोन की, अमेज़न की वेबसाइट को हम अगर विंडोज़ पे देखें तो वो विंडोज़ फ्रेमवर्क पे प्रॉपर्ली काम करेगी। अगर हम हमारे फ़ोन में ओपन करेंगे अमेज़न ऐप से तो भी वो परफेक्टली काम करेगी। अगर आप अपने कंप्यूटर में देखेंगे तो भी आपको वैसे ही दिखेगी। ठीक है, तो क्योंकि उसके साथ में क्या है मल्टी डिवाइस सपोर्ट चल रहा है, उसकी जो प्रोग्रामिंग की गई है वो इस तरीके से की गई है कि वो जिस भी डिवाइस पर रन हो उसके अकॉर्डिंगली वो अपने आप को मोल्ड कर ले, रन कर ले, राइट। So .NET Compact Framework and Mobile Internet Toolkit are step ahead in this direction. Automatic memory management. While developing application, developers had to develop an eye on system resources like memory. Right? Memory is a major part of every application. So memory leaks are the major reason of failure of application. So .NET take this worry away from the developer by handling memory on its own. तो यहाँ पे ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट होता है एंड गार्बेज कलेक्टर टेक केयर ऑफ unused object at appropriated intervals. Even in Java, there is automatic memory management system.gc runs, right, to swap away the unused objects. Okay. Then next is compatibility with COM and COM+. So before the introduction of .NET, COM was the practice standard for com- componentized software development. Companies have invested a lot of money and efforts in developing COM components and controls. So good news is you can still use COM components and ActiveX controls. So basically these are controls, COM and COM+. These are basically controls, like ActiveX controls. So these allow you to use your existing investment in .NET application. .NET still relies on Complex for features like transaction management, object pooling. So it provides enhanced declarative support for configuring complex application right from your source code. So your complex knowledge still remain as a valuable asset. So this is like you don't need to throw away your skills, right? This is also support the components and controls. So you don't need to throw out your code. .NET support this also. Okay, no more DLL help. So if you have worked with COM components, you are aware of DLL help. But हम जनरली अब कॉम कंपोनेंट्स पे काम नहीं करते हैं तो ये हमारे लिए यूजलेस हो गया है। जब कॉम कंपोनेंट्स पे काम किया जाता है तो देर आर लॉट ऑफ DLL फाइल्स आता है, राइट। तो उनको मैनेज करना, उनकी सिस्टम रजिस्ट्री करना, राइट। तो ये सब बहुत ज़्यादा उसमें काम कर जाता है। द फिलोसॉफी है कॉम की वन वर्जन ऑफ कंपोनेंट अक्रॉस मशीन, तो मशीन इंडिपेंडेंट होता है। बट डॉट नेट ने इसको पूरा क्या है ख़त्म कर दिया है इसे पूरी तरीके से। अब क्या है कि डॉट नेट कंपोनेंट्स जो है उन्हें कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है सिस्टम रजिस्ट्री। ठीक है, स्ट्रॉन्ग जैमल सपोर्ट है, ऑफ कोर्स it's hard to find a programmer who is unaware of XAML. So XAML has gained a lot of strong industry support and almost all the vendors have released some kind of update and patches for XAML compatibility. Even in Java, there's XAML compatibility, right? For Java EE applications. So .NET tried to harness power of XAML in every possible way, in addition to providing support for manipulating and transforming XAML documents.
So .NET provides XAML web services that are based on standards like HTML, XAML, and so. Okay. नेक्स्ट इज ईज ऑफ डेवलपमेंट एंड कॉन्फ़िगरेशन। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सबसे पहले जो देखा जाता है वो यही देखा जाता है कि ईज ऑफ डिप्लॉयमेंट एंड कॉन्फ़िगरेशन है कि नहीं है। अगर आपको आपका इंस्टॉलेशन और कॉन्फ़िगरेशन ही बहुत ज़्यादा मैसिव होगा, हार्ड होगा, तो आप जनरली यूज़ नहीं करना चाहेंगे वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट, या वो IDE। So deploying window application, especially that use COM components, were always a tedious task. But .NET doesn't require any registration, so deployment is very simplified. This make Xcopy deployment variable, and configuration is another area where .NET, especially ASP.NET, shines over traditional languages. And the configuration is done via special files, XAML vocab. Since most of the configuration is done via configuration files, so there is no need to sit in front of machine and configure the application manually. So it's just like next, 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 finish, right? नेक्स्ट इज सिक्योरिटी। सिक्योरिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर आप पुअर सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे तो कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज नहीं करना चाहेगा अपने एप्लीकेशन में, राइट। तो माइक्रोसॉफ्ट ने भी डॉटनेट के साथ में एक्सटेंसिव सिक्योरिटी सपोर्ट दिया है। डॉटनेट प्लेटफॉर्म सेफ एंड सिक्योर फॉर enterprise applications. Features such as type safety, code access security, and role-based authentication make overall application more robust and secure. So this is the basic introduction of .NET, like what is .NET and the features of .NET. So that's all for this class. Thank you so much.